everyone, a very warm welcome to my channel Ritu Garg Maths Classes. Today in this video we are going to take up the topic of linear programming problems to be solved by graphical method. This is video lecture 2. Video lecture 1 has already been uploaded on my channel. You can see I'll put its link in the description box. So in that video we had taken up the same topic, but it was for a solution of a bounded problem. The problem, linear programming problem, which has bounded corners. And today we will see another different cases in which L.P.P can be having the different solutions. So let's start. Solve the L.P.P by graphic method. Maximize z. This is our objective function. Maximize z is equal to 5x1 plus 4x2. Subject to the constraints. ये आपके पास constraints हैं, conditions हैं, criteria जिनके अंदर आपने उसको solve करना है, maximize करना है. 2x1 minus 4x2 is less or equal to 1. 2x1 plus 4x2 is greater or equal to 3. And x1, x2 remain to be greater or equal to 0. ये जो तो last constraints हैं आपके, ये सिर्फ आपको shading में help करेंगे. When x1 and x2 are both positive, it means shading will restrict to only the first quadrant. So we need to plot only these two constraints. For plotting, when you start with a solution, you will always take the equality, because inequality just gives you shading. So for plotting the line, you need to take the equality. Equation लेनी है आपने equal to 1. So now there are two methods I had discussed in video 1 also. There are two methods. You can give some values to x1 and solve for the corresponding values of x2, or another method which I discussed right now, I am also discussing it now. So let's see. You have to do it like this, that this 1 comes over here and this 2 goes to the denominator, because denominator is nothing else but the numerator. आप देखो अगर इसको solve करते हो, x1 whole divided by 1 by 2, this is nothing else but 2x1 upon 1, that is 2x1, minus can be written as x2 divided by, because plus minus is minus. अब इसके नीचे क्या है 1 और whole divided by 4, so that will be 4. Denominator goes to numerator, so that will be 1. So this gives you the easy points 1 by 2 comma 0, because x1 के नीचे 1 by 2 है तो पॉइंट x1 के ऊपर लाई करेगा, x1 एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और ये x2 के नीचे है तो ये जो पॉइंट होगा ये x2 पे लाई करेगा. So this is the easy method of solving. If you do not find it easy, तो आपके पास एक standard method होता है. You can give x1 as 0 value and solve for x2, and then give x2 the value 0 and solve for x1. So it is totally up to you. Now I am going to take up the second equation. 2x1 plus 4x2 is equal to 3. आपको RHS में 1 बनाना होता है. So it means you have to divide throughout by 3. This is the first step. Then numerator goes to denominator's denominator. Same way here. So here you get x1 के नीचे आपके पास 3 by 2 आ रहा है. इसका मतलब जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 3 by 2 comma 0, because x1 एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और जो आपके पास ये दूसरे x2 के नीचे आ रहा है वो x2 एक्सिस पे लाई करेगा, so वो पॉइंट आ जाएगा 0 comma 3 by 4. So points are ready. Now we'll start plotting the graph. Now we are going to plot the points half comma 0. This is the first point. Then 0 comma minus 1 by 4. So this lies on x2. आपके पास ये दो points आ गए. So you have to draw a straight line passing through these 2 points. Always put arrows on the ends. Mark the points half comma 0, 0 comma minus 1 by 4, and write down the equation on one edge. 2x1 minus 4x2 is equal to 1. This you have to write down equation only, so take care, inequalities will not be done over here. Next point is 3 by 2 comma 0 and 0 comma 3 by 4. ये आपके पास दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए, and you draw another line, put arrows, then points 3 by 2 comma 0, 0 comma 3 by 4, and the equation. This is 2x1
plus 4x2 is equal to 3. Now comes the shading part. For first inequality, I am going to do the rough work over here. You need not do it, or you can do it on one edge. The very first inequality is 2x1 minus 4x2 is less or equal to 1. अब आपको इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई करा के चेक करना है. पहले तो ये लोकेट कर लो कि ये लाइन कौन सी है कॉरस्पॉन्डिंग. ये आपके पास ये लाइन है. So this line is dividing the whole plane into two half planes. One is on this side of the equation and another is on this side. अब आपको ये चेक करना है कि ये इस तरफ जो ओरिजिन आ रहा है वो वाला एरिया हमारा कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा. सो अगर आप ओरिजिन डालते हो x1 x2 मतलब 0 0 डालते हो तो ये बनेगा 2 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 0. सो 0 इज़ लेस और इक्वल टू 1. 0 1 से लेस होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए. लेस तो होता ही है. सो वन ऑफ द इनइक्वालिटीज इज डन. 0 लेस और इक्वल टू 1 विच इज़ ट्रू. अगर ट्रू है तो आप टिक लगाओगे. इसका मतलब है कि ये 0 0 को सेटिस्फाई करता है. तो इस लाइन की शेडिंग 0 0 की तरफ जाएगी. अब ये लोअर क्वाड्रेंट में आप डाल नहीं सकते बिकॉज x1 x2 पॉजिटिव दिए थे. सो इसका मतलब हमने जो शेडिंग रखनी होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखनी होगी. सो थोड़ी सी शेडिंग करके आपने एक एरिया बना लिया जिससे इंडिकेशन मिल जाएगी कि एरिया आपका किस तरफ जा रहा है. नाउ नेक्स्ट इनइक्वालिटी 2x1 plus 4x2 is greater or equal to 3. This is the second line. You can see, you have to see which line is corresponding to this, and now you are going to again check origin. 2 into 0 0 plus 4 into 0 0. So 0 is greater or equal to 3. अब ये line है आपके पास. इसमें 0 ग्रेटर और इक्वल टू 3 विच इज़ फॉल्स. 0 ना तो 3 से बड़ा होता है ना ही इक्वल होता है. सो दिस इज़ फॉल्स. इसका मतलब इस लाइन के जो नीचे की तरफ 0 0 आ रहा था वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा. तो आपको अगेंस्ट जाना है. 0 0 की तरफ नहीं जाना, अगेंस्ट जाना है. इट मीन्स इस लाइन के दूसरी तरफ जाना है. 0 0 की तरफ नहीं आना तो दूसरी तरफ जाना है. अब आपके पास साफ सा क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कि ये जो एरिया है, दिस होल एरिया इज गिवन बाय द common shaded region. So you can put like this. अब ये कहीं बाउंडेड नहीं हो रहा. इट इज़ नॉट बीइंग बाउंडेड. ये ओपन है. आपको इसके कॉर्नर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे बिकॉज कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ जा रहे हैं वी डू नॉट नो. सो सच अ प्रॉब्लम इज नोन एज अनबाउंडेड प्रॉब्लम. सो व्हेन यू जस्ट कंप्लीट इट इन द एंड, इन द कंक्लूजन, यू कैन से सिंस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, देयरफॉर द solution is unbounded, or you can say the problem is unbounded. So it is an unbounded problem. Different cases of L.P.P appear. In the very first video we had taken up a question in which you had a bounded solution. तो उसके corner points आते हैं. corner point method से आप उसकी objective function को maximize या minimize कर सकते हो. But in this question you cannot maximize z. आपको नहीं पता आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स इस तरफ इन्फिनिटी पे कहाँ जाके मिलेंगे. सो सच अ प्रॉब्लम इज नोन एज अनबाउंडेड प्रॉब्लम. वील ट्राई टू टेक अप मोर क्वेश्चंस इन डिफरेंट वीडियोस. सो कीप ऑन वॉचिंग. अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग and please don't forget to subscribe to my channel. Thank you.